सर आ रहा सर, माइक पीछे जा रहा सर, यही सस्पेंस है सर, जहां देखेंगे वहां से कुछ नहीं आएगा. अच्छा. Hi, Anu, Pooja here. How have you been? सर यही होगा, आप मौका छोड़ेंगे कोई और चाकू ले लेगा. Anu, the obvious question, collaborating with your lucky charm, what is it like? Yeah, lucky charm better work. That's Mike. Yeah, we are in Mike. No, it's on. You just have to talk in it. You know, like this. Hello. Hi. No, it's not on. She put it off. You fiddled with it. See, everybody wants to direct me. It's the revenge time. You know she's had a hard time with us on set. Yeah, everyone can see why. So the question, why Vidya again after Shakuntala Devi? Yeah, why? Because I think, you know, when we started writing the script and when we started figuring out this character, it was really like, it felt like a Vidya role. Not like she's similar to Vidya, but it's a fact that, you know, we wanted someone of her caliber, of her gravitas, to actually, you know, she's like the one who takes us on the journey through this film, and someone you can trust, and you kind of go with that. So, but as you know, like Vidya doesn't say yes very easily. So, so I had to first make sure that she loves the script as an audience, and B, she finds something in that I think she gets to do. So I think, yeah, and so it was, I knew that she enjoyed, you know, doing Shakuntala with, you know, with me, but I do think that I earned this another time, you know, with the script. Yeah. Looking forward to it. It's looking good. Now Vidya's doing, what do you have to say? No, I was just a bit stumped when she said earned it. She's being too humble. But firstly, hi everyone. It's so wonderful to be here, you know, for a theatrical release and to be doing an in-person press conference after so long. So thank you all for coming. I loved the script. I enjoyed working with Anu and Shakuntala, and we were figuring what to do next when she came to me with this, and I had no questions really after I read it the first time. Isn't that true? Yeah. After the first time, there were no questions, but after that, the questions started. Yeah. So I'm just happy to have teamed up with her and Abundancia again. Yeah, and you know, have I answered your question? Okay, Pooja. Thank you. Hi, Vidya. Here. Hi. Here. Can you see me? This side. Yeah, hi. Hi. Princey here. Hi, Princey. Hi. The moment you take a role, it becomes like, you know, everyone looks at it. How do you analyze how do you decide on a role before taking it up? Oh my God, I think I'm a very impatient, restless, easily bored audience. So when I read something, primarily, you know, I ask myself whether it's something I'd watch as an audience. And then, of course, whether the character calls out to me, whether this, you know, and whether this overall script works for me. The director is very, very, very crucial. And then also the producer. Because you can only make the right film with the right kind of producer. Yeah. So my next question is for Mr. Vikram Malhotra. You know, you've been turning such great women-centric roles. You know, what do you think is something that will, you know, the next role, the next character that you like to bring, a kind of genre that you like to bring with a woman role in center to it? I've merely been enabling strong characters written for women. It's directors like Anu, writers who create those roles and those powerful characters. And we've been very fortunate that a lot of that has, I guess, in many ways by divine intervention, in many ways by laws of attraction landed with us. You don't have to look too far for what the next strong woman-centric film from us would be. There's a film called Sukhi, which is right around the corner. It stars Shilpa Shetty, and it takes on a very regular tale with a very nuanced glance. So there's something or the other always at work with strong women characters at Abundancia. Hi, Mayur here, center here.
I have one question for Mayur for both. is here, is right there. हाँ जी. I have a question for Anu and Vidya. So basically शकुंतला देवी उसमें आपने दोनों ने गोरों को गणित सिखाया और विद्या आप और दोनों इस बार गोरों को जासूसी सिखा रही हैं. देखिए हिंदुस्तानी होने का फायदा यही है कि वी आर बेटर एट एवरीथिंग. तो धीरे धीरे हम दुनिया को सब कुछ सिखा देंगे. And Anu, obviously for this story, how important was it to have this Scottish setting? When you see the film, you'll realize that why. I mean, I live in London, and if you know that the top 10% of rich people in UK are Indians. You know, it's kind of the playground of all the rich Indians. Like half the time, like we were joking that if we have a screening in London, there'll be more people attending. Because everyone is in London. So it is so when I actually, it's from my lens that I see that I always see that people are having these lavish parties and I was in Scotland when somebody told me that most of these Scottish castles are now owned by Indians, Arabs and Chinese. Oh. So that's how it all started, that what, the world is changing and what happens if a billionaire hosts a party like this in this kind of a location. But there are some more details which you will see once watch the film. एक आखिरी सवाल विद्या, obviously you've done बॉबी जासूस before, वो तो खैर बहुत ही अलग फिल्म थी, लेकिन उस जासूसी और इस जासूसी के अंतर और कैसा एक्सपीरियंस दोनों का आप अगर इसे बहुत ही अलग, क्योंकि दोनों इंसान बहुत अलग हैं. मीरा राव बहुत सुलझी हुई है and she's just very unlike a detective really. She's not your classic detective. And I love saying this, a classic murder mystery with a not so classic detective. But मज़ेदार बात ये है कि एक्चुअली मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पर we have a fantastic cast on this film and I think it was so much fun for all of us to work together. मुझे याद है कभी Anu would scream saying quiet जैसे टीचर्स या क्लास मॉनिटर्स नहीं होती वो परेशान हो जाती. पर बड़ा मजा आया सबके साथ. लीडर या थैंक यू. और पहली बार किसी की हंसी मुझसे भी ज्यादा. विद्या जी कहीं आशीष कपूर को आपने तो नहीं मारा? बहुत ही पीछे चले गए वो. मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. आशीष कपूर को कहीं आपने तो नहीं मारा, किल नहीं किया? क्या बोले आप? अच्छा ठीक, ओके. इस सवाल का जवाब आपको शाम को मिलेगा जब आप फिल्म देखेंगे. अच्छा विद्या जी, इंडस्ट्री में अगर आपको किसी का खून करना हुआ तो यही तो चाहिए था सवाल. आप किसका खून करना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो इंडस्ट्री में जिसके आप जो भी हमारी फिल्म्स थिएटर में नहीं देखते, पायरेसी को बढ़ावा देते, सबका खून करूंगी मैं. थिएटर में रिलीज हो रही है नियत, अगर आपकी नियत साफ हो तो थिएटर पहुंच जाइए देखने. सही है कि नहीं? हाँ तो विद्या पहुंच जाएगी खून. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नहीं अरुण का तो बिल्कुल नहीं. Hello. Hi. This side. Hi. Hi. This is Akash from Bollywood Bubble. My question goes out to Vikram and Manish, both of you. Earlier in the event, you mentioned that this film is coming in theaters. So today, do you feel like when so many big films are also coming on OTT, it has become like a little दिखाने की कोशिश की है, हालांकि रोल बहुत स्ट्रांग था. यहाँ पे भी राम जी, आई टोटली एग्री विद यू. आप कहीं से कहीं स्ट्रांग वुमन और एक डिटेक्टिव जैसा तो नहीं लग रही हैं. वो वल्नरेबिलिटी कहाँ से लेकर आती हैं और वो कितना हेल्प करता है आपको इस रोल के लिए? आई थिंक इसमें आई थिंक मोर देन मी इट्स अ डायरेक्टर हु makes me do what I do, and therefore I think Anu should answer this question. सब कुछ तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा because the script, the character was very beautifully etched out by Anu. I've only followed her directions, her instructions.
एंड या आई थिंक अच्छा लगता है जब मौका मिलता है कुछ एक अलग किरदार निभाने का. तो लाइक राम सेड, शी इज़ नॉट योर टिपिकल डिटेक्टिव, यू नो, दैट्स व्हाट सेट्स हर अपार्ट. That's what makes her very interesting and exciting for me. But whatever I've done is, if it works, then it's thanks to her. It's because of yeah. Don't say that. Cancel. अनु, आपसे एक सवाल है. जब पूरे OTT जैसी चीज़ें आती हैं आजकल, एक फिल्म दूसरी जगह, दूसरे देश में, सब जगह पर आ रही है, लोगों को बहुत सारे क्लासिक्स देखने की भी आदत पड़ गई है. ऐसे में जब आप नीयत जैसी फिल्म लेकर आते हैं तो एज अ डायरेक्टर कितना प्रेशर होता है कि भाई इस बार की ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, तो कुछ अलग तो देना पड़ेगा. Yeah, I think it's a good thing, you know, that people are watching different things, and it's exciting and challenging. So and I've always, like, from the day we started writing, I always imagined it to be in the theaters. It's that kind of a film, you know, when you watch, there is a community viewing, and you know, people gasp at the same time, and yeah, aisi film hai, you know, it is that, you know, and usually this genre of films, it's like a puzzle, you know, that you sort of, there is a relationship with the audience, so you kind of, there are expectations, and हर कोई जब ऐसी फिल्म देखता है, everybody says हाँ मुझे पता है क्या होने वाला है. There is always that, and you have to have that relationship, but you also have to be one step ahead of them. And this is, I love this genre. मैंने मतलब हर, you know, film देखी है. So I kind of, me and my, you know, team of writers, we worked really hard in creating something different, and we are aware that, you know, there is such quality, you know, options available from across the world. And I'm proud that we are at that level. And I really hope that, you know, the audiences sort of see that and enjoy it for, you know, what we've created. Thank you. Hello. My next question, I'm from सेजल जैन, दैनिक भास्कर. मेरा प्रश्न है आपसे, विद्या मैम से. आप पिछले 4 सालों से मीडिया और शूट से दूर रही हैं. क्या आप कोई अच्छी स्क्रिप्ट की वेट कर रही थी? नहीं, मैंने 3 फिल्में की है इस दौरान. सारी फिल्में प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई, और हमने बहुत प्यार बटोरा इन फिल्मों के लिए. शकुंतला देवी जो मैंने अनु मेनन के साथ की, और फिर शेरनी और जलसा. तो मुझे दुख इस बात की है कि आपने ये फिल्में नहीं देखी है. आज आपका होमवर्क थिएटर पे ही आपकी. नहीं, थिएटर में. अच्छा. हाँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, यू नो, पैंडेमिक था. तो ये बहुत अच्छी बात है कि पैंडेमिक होने के बावजूद हमारा काम हम लोगों के साथ शेयर कर पा रहे थे. पर हाँ, अब थिएटर में रिलीज़ करने का मौका मिला, और मुझे लगता है नियत जिस तरह की फिल्म है ना, वो बड़े पर्दे पर देखने का मज़ा ही कुछ और होगा. आपने अब जब ट्रेलर देखा, मुझे खुद लगा कि यू नो, हालांकि मैंने फिल्म ऑलरेडी देखी है, पर जब बड़े पर्दे पर देखो ना, इसका 4 चांद लग जाते हैं. आपने ग्लैमर्स और घुमराह जैसे कई किरदार किए हैं, तो आपको गुमराह कर दिया उनको. तो आपके कौन से किरदार आपको ज़्यादा मुश्किल लगा है? कौन से फिल्म? आपने ना ग्लैमर्स और गंभीर जैसे किरदार किए हैं, तो आपको कौन सा किरदार ज़्यादा मुश्किल लगा? सीरियस रोल्स एंड ग्लैमरस रोल्स. सो अच्छा, ऐसे मुझे मेरा पेट नहीं भरता. मुझे हर टाइप का खाना अच्छा लगता है, वैसे ही हर टाइप का रोल अच्छा लगता है. थैंक यू. हाय, अमित भाटिया फ्रॉम एबीपी न्यूज़. मेरा क्वेश्चन शहाना और निकी से है. फर्स्ट थिंग, आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में, एंड सेकंड, जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं, स्क्रीन स्पेस कहीं ना कहीं कम होता है, तो उस कम स्क्रीन स्पेस में कैसे खुद को इसमें आपने जस्टिफाई किया? इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं, फिल्म तो वही 2-2.5 घंटे की होगी ना. जैसे स्टेज छोटा है, सब लोग फिट हो गए. लेकिन एक थैंक यू सो मच. थैंक यू. इन्होंने मेरा जवाब दे दिया है. इस फिल्म में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है. इस फिल्म में सबका पार्ट आपके आंसर के लिए बिल्कुल बराबर है. शाहना यार, ये एक्चुअली फिल्म जो है ना, इट्स ड्रिवन बाय द कैरेक्टर्स. ये अनु की का डिज़ायर भी था कि हर जो कैरेक्टर है वो अजीब गरीब अटपटा सा कैरेक्टर है. तो हर किसी का जो रोल है वो इतना स्पेसिफिक है कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं चैलेंज करती हूँ कि आप किसी को भूल जाएं इन कैरेक्टर्स में से.
तो हमारे लिए भी इट वॉज अ वेरी, वैसे भी आई डोंट थिंक जब एक ensemble करते हैं ना तो एक दूसरे की ज़रूरत होती है, उसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात नहीं होती। सामने वाले का काम अच्छा होगा तभी आप हमको भी याद रखेंगे ना। एक सीन में सिर्फ आप ही अच्छे बाकी नहीं हैं तो फिर आपको क्या याद रहेगा फिल्म के बारे में। सब कैरेक्टर्स, कहानी, एक उसका जो ग्राफ है वो जब अच्छे से बनता है तभी आप भी उभर के निकलते हैं। तो हमारे लिए दिस एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल इज़ वॉट मेड अस बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड देर इज़ नो डाउट दैट हम सबका जो किरदार है, हम सबका जो काम है, वो आप बाकायदा एक एक करके आप स्पेशली बात करेंगे उसके बारे में। एक मिनट, आपने दो गलत नाम ले लिए, निकी वालिया और शाहना गोस्वामी, बाकी सबको बाहर फेंक के अपनी स्क्रीन स्पेस लेते हैं इन ऑल देयर प्रोजेक्ट्स। अरे ये लोग नहीं दबते यार, इवन विदाउट वन लाइन दे विल टेक द स्क्रीन। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन जो था ना वो शायद वो ठीक से समझा नहीं, आंसर नहीं हुआ। बट आई से कि जब टाइम कम होता है, जाहिर है, तो कहीं ना कहीं टाइम कम नहीं है, टाइम कम नहीं, टाइम बहुत कम था।